to rehearse. Vocalist. Rachmaninoff. I haven't played classical music, real classical music, in a long time. So I'm really excited. I need it. It's like hygiene. It's like watching. Refreshing the brain. Yes. And meet Stephanie, who is gonna play on piano. Hi. So it's Stjepan and Stephanie. What a lovely duet. What a And we're coincidence. gonna rehearse for the first time. So let's see what happens. And so far, my shirt is matching the piano. Look, the same color. Wow. Even the cello case is matching me. Everything is matching. I hope the music will match too. Let's hear it. Let's see. We are playing a beautiful vocalist, one of the most beautiful melodies ever written. Wouldn't you agree? Yeah. Is this one of your favorite as well? Yeah. It's really hard piece to play together. Why? A lot of small motifs. And you can phrase it like different, you know, like They're just gonna feel it. We don't even think about it. Okay. My approach to music was never intellectual. I was always playing from my feeling, on my instincts. Because more you think, more you get caught up in. You just get stuck. And life in general, you shouldn't think much, actually. This is my advice for all of the people. Less thinking, better life. Less thinking, more feeling. Less thinking, better music. Don't analyze. Don't go into, this analytical mindset. Because even composers, sometimes Bach wrote some piece in minutes. He doesn't even remember he wrote it. He gets so much things to do. Compose the next mass, compose the next cantata. He doesn't even remember he wrote something. And now there is some guy, a nerd, watching every note in museum. What did he meant? What did he mean? He forgot he wrote it. My goodness. So everyone, welcome to the new amazing video for a Hauser Cello. And everyone, how are you? I hope you all fine. You don't miss any video for the latest update, and you watch every day every latest update and share with your friends, your family members and your relatives. अब बजानों का टाइम ख़त्म हो गया, मैं कुछ लगाने लगा हूँ कानों में, तो मुझे इशारा करके बुला ली. ओ जियो लोगों की ना सोचा दुराब, बस मुझे दुख एक बात का रहेगा दुराब, तेरा चैनल नहीं उड़ना चाहिए था यार. आप हमने जितनी केयर हम लोग अपने चैनलों की करते हैं ना, वल्ला नहीं उड़ना चाहिए. हम लोग फेस बनाते हैं अपना दुराब, 2 मिनट का फेस बहुत बड़ी चीज़ है दुराब, यकीन मान, नहीं उड़ना चाहिए था यार. सारी बात मैं कहता हूँ, जो मैंने उस पर मेहनत की थी ना, बस मेरा बहुत दिल दुखता है दुराब, यकीन मान. मुझे मेरे खुद बचे, अल्लाह की कसम, मेरा तमाम उड़ गया था. अब बस दिल रात में दुराब होते हैं ना, कोई वायलेशन की हो, ठीक है ना, कभी हम लोग ने कोई मिस्टेक गलती से भी नहीं की. और तू तो मैं कहता हूँ जितने एक्सपर्ट बंदा है ना, अफस दिन रात मैंने इस पे मेहनत की है, दिन रात. यार दुराब, कसम से काश हम लोग जट जुडी का ना सोचते, अगर ना करते होते ना. आज दुराब तुझे चैनल माशाल्लाह कितने, मैं कहता हूँ ना कि आज तुझे भी नहीं $100 फालतू देता था. आज तुझे ना दुराब वो चैनल अगर तू उस टाइम बंद हुआ, 1000 के बदले मैं तुझे बताता हूँ कम से कम ना 1200 1250 अब तक अगर तेरा बीच में ना बंद हुआ तो तूने जट जुडी ना डाली होती. क्यों दुराब, आराम से तुझे दे रहा होता कि ना दे रहा होता. मेरा $100 मुझे मिल रहा था अफस, यकीन कर बस. यार. तूने